Hi, good evening, everyone. I hope I am audible and my screen is visible. So, if you can just give me a confirmation that everything is working fine, we can start with the session. Yeah, if everything is okay, we can start with the session. Please let me know if uh, I'm audible, visible, and yeah, I think I'm visible. Hi, Shubham. Hi, Gaurav. Yeah, good to go. All right, perfect. Okay. Shubham, I'll just check once from my end if there is something that we can enable. If there is some setting that we can enable, and if there's something missing, then definitely we'll rectify it. But I'll need to check that once from the back end if that is something that can be made visible, and if there is something that is missing from our side. Okay, so we'll do that. All right. So welcome everyone to the session. Thankfully, the start of the match has been delayed because of rain. So I can see a lot of you today. I was not expecting so many people to be there, honestly, because I thought that a lot of you might be uh, interested in watching the match simultaneously. But okay, chalo, good for all of us that you are here. I didn't want to change the timing because then it would have created unnecessary confusion among all of us. So that's why we decided that nee, let's stick to 8 p.m. So that was one thing. Now, today we are going to do algebra. I hope all of you have seen the test and you have solved the questions that were there. So there were 9 questions that were there in this particular test that we floated yesterday. And again, I wanted to keep the level of difficulty a bit lower for this one. As in not lower, but yeah, compared to CAT 2023, I wanted to keep it slightly sane. So that a lot of you would have been able to answer and appear for the test without a lot of fear, right? So that was the whole idea behind keeping the level of difficulty of the test what it was. So that's why we thought of doing it that way, right? So that is basically algebra. Now, algebra, if you look at it, over the last many years, algebra has remained more or less consistent in terms of the level of difficulty. So if you look at any of the past CATs, right? So since the time CAT split into three sections, three time sections since CAT 2015, I have been appearing for CAT every year. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 years, 8 successive years. If you look at the format of the test or the kind of questions that appeared, algebra was generally on the easier side. Okay, so algebra was never difficult as such. And when I say on the easier side, it basically means that the kind of concepts that were tested were fairly straightforward. Straightforward meaning we were dealing with linear equations, quadratic equations, inequalities, modulus, functions, coordinate geometry, maybe a bit of it, right? Yeah, functions, right? So all those things used to be there in algebra and काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस थे तो ऐसे नहीं था कि कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या थिंग्स बिकेम वेरी और देयर वर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड राइट सो वो सारी चीजें नहीं हुई अलजेब्रा के but CAT 2023 was a surprise, right? And again, one thing that happened was in the morning slot when people took it in the first slot, people were rattled. तो थोड़ा हिल गए थे लोग देख के कि अरे मतलब ये क्या हो गया करके. And as the day progressed, people kept on experiencing the same thing in slots 2 and 3. So by the time I went and took CAT in slot 3, I knew a lot of people at my center or a lot of people who were my students back then who were already scared of the test. And वहां पे जाके बैठ गए. And once you go and sit for the test with that kind of a mindset, now generally matlab you start missing out on subtle clues that are there in the questions. So for example, I'll give you one example. We will be covering this question at some point in time aage jaake. But there was a question which said that for what values of m, let's say for example, will these two equations have infinite solutions? ठीक है तो infinite solutions था उसके अंदर. Now when do two equations have infinite solutions? When they completely overlap each other.
ठीक है, बट अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट डिड दे थिंक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, राइट, एंड पैरेलल लाइंस में फिर रेशियो निकालने बैठ गए। तो जो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड मेड इट अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट एक्चुअली वाज। तो ये सटल क्लूज मिस नहीं होने चाहिए। So last year also algebra was difficult. I agree algebra was difficult because a lot of it had to do with the kind of complexity that existed and the kind of steps that you had to do. So x raised to 8 plus 1 by x raised to 8 is something. X raised to 9 plus 1 by x raised to 9 क्या होगा? तो backward calculation करना है. Then again दो बार cube करना है. So that made it a bit difficult. I agree. But it was not as if you'll not be able to understand the solution at all. ठीक है? So algebra has always been a technically inclined area that existed. आज भी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे मोस्टली एवरीथिंग इज थियोरेटिकल। तो अगर वो थियरी पता है यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी नाइसली वेरी क्विकली। अगर थियरी नहीं पता यू माइट स्ट्रगल विद द सॉल्यूशंस। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब सा कुछ एक ट्रैप है या बहुत लेंदी सा सॉल्यूशन है। सो नन ऑफ द क्वेश्चंस हैव लेंदी सॉल्यूशंस टुडे, राइट? यू कैन possibly solve all 9 questions within a matter of 10 minutes if you are a brilliant candidate. ठीक है? So that is basically what this entire session is all about. So for those of you who have solved the test, great. You can solve along and you can just check whether whatever you did was right or not. And for those of you who haven't solved the test, again I'll do the same thing because a lot of people are not used to this entire initiative of daily drill कि पहले टेस्ट देना है फिर वीडियो देखना है. What I will do is I will wait on a particular slide for 30 seconds, 40 seconds. Then you will get a head start. You can start solving it and then you can look at the solution that will follow. बीच बीच में you can pause the video as well if you want to sort of try out things on your own and उसके बाद you can just continue with the video. तो वो भी चलेगा क्या आपको, ठीक है? So that's what we are looking at in this particular context, right? So hi Shivansh. Yeah, Krish is saying even arithmetic had some parts of algebra in 23. I think we discussed this, right? In one of the sessions, I think we discussed this. That how do you say whether a question is geometry or a question is arithmetic, right? तो arithmetic question में भी geometry हो सकता है, geometry question में भी arithmetic हो सकता है. So those kind of overlaps will always be there at the CAT. But मतलब वही, you have to be very clear in terms of both arithmetic and algebra. तो कहीं पे ऐसे हो सकता है कि इक्वेशन बनाने के लिए पूरा स्टोरी बताया गया है, सो मेनी रोज, सो मेनी कॉलम्स, सो मेनी ट्रीज इन एवरी रो एंड वो सबका फैक्टर करके देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन डिजाइन एंड फाइनली यू हैव टू फिगर आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? वो हो सकता है. So those kind of questions you can always see at the test. But if your basics are in place, definitely वो manage हो जाता है, right? So let's get going. Let's start with the first question. So this is the first question that we have here. Again, as promised, I will give you a head start of 30-40 seconds and then I will start solving this particular question. कहीं पे भी अगर डाउट आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता, please feel free to put it in the chat box. Yesterday I received a very interesting comment saying that if I use a lot of Hindi, then people might not be able to understand it. तो किसी को अगर वो issue हो रहा है तो let me know. I'll try to explain it to you again in English if that is the case and vice versa. मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में भी I can explain. I am like pretty decent at both languages, so I can manage वो वाला part. ठीक है? So let me know कहीं पे भी कुछ भी आता है तो the whole point is for us to learn together और कुछ नहीं है. So whatever facilitates that bit, I'll be ready to do it. ठीक है? किसी को मराठी में इंटरेस्ट है तो आई कैन डू दैट आल्सो बट आई डोंट नो इफ दैट विल बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. x plus 1 equals x square, x is greater than 0, then 2x raised to 4 is what? ठीक है? So this is basically the question. Very straightforward question. कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अलजेब्रा क्वेश्चंस का ब्यूटी ही ये होता है, लाइक अरिथमेटिक और ज्योमेट्री और पीएनसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, राइट? दिस इज बेसिकली दी एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करो, दैट्स इट, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट. Arithmetic में you will have a milkman is a dishonest person. Every morning he mixes 2 liters of milk with 500 ml of water. It's in the form of a story. Here you will have no story, so that's the best part. Now here if you look at this one, x plus 1 has been given to us as x square and we are supposed to find out x raised to 4 के फॉर्म में क्या है. Now how do I go from x square to x raised to 4? Of course, right? X square, if I square this, then I'm going to get something in the form of x raised to 4. So there is this nice concept that I have always advocated. You have to take this. Okay, it's called the leap of faith. So you have to understand that you are basically somewhere here and you are expected to reach here. And this is basically the gap that exists, beach wala, right? You have to essentially take this leap of faith. Okay? And only then will you be able to reach here. तो ये leap of faith क्या होता है? You know that x square the whole square is going to be x raised to 4. I have to simply square this and I will reach somewhere, right? So that is basically the point.
I have to do this and I have to expect that I'm going to reach some. So यहाँ पे I have to just simply square this. So x square equals x plus 1. This is what we have. If I square both sides, I will get x square the whole square equals x plus 1 the whole square. ठीक है. So x raised to 4 will be my left hand side. My right hand side will be x square plus 2x plus 1. Simple expansion. Now this is what we have got here. I want to find x raised to 4 in the form of a number ना. All these are numbers. So I have to somehow get rid of these x's. तो मैं x का कैसे निकाल दूंगा? I can replace something ना. I can replace this x square by x plus 1. राइट. सो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने एक्स प्लस वन लिख दिया. सो आई एम गोइंग टू गेट एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स एक्स रेज टू फोर. तो मेरे को क्या मिलेगा? थ्री एक्स प्लस टू मिल जाएगा. नाउ एक्स रेज टू फोर इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री एक्स प्लस टू. राइट. तो थ्री एक्स प्लस टू के फॉर्म में है. नाउ हाउ कैन आई गेट थ्री एक्स प्लस टू? एक्स का वैल्यू चाहिए ना मेरे को. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. Why is this important? Because this is a quadratic equation. And quadratic equation अगर दिया है तो मेरे को x के दो वैल्यू तो मिल जानी चाहिए ना. Because it is quadratic. पावर टू है तो दो वैल्यूज पे सेटिस्फाई होना चाहिए. अब वो डिस्टिंक्ट है, रियल है, सेम है, वो अलग स्टोरी है. बट आई शुड गेट टू वैल्यूज ऑफ x. राइट. So here what we can do in this case is we can try to figure out what are the roots of this equation. So x square minus x minus 1 will be equal to 0. If I rearrange ये सारे terms, x plus 1 को मैं right में लेके आ गया. तो x square minus x minus 1 equals 0 हो गया. Now I know that the roots of this equation are given by this very amazing formula that exists. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. जिसका आपकी लाइफ में कोई यूटिलिटी नहीं है एक्सेप्ट कैट. ठीक है. सो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ये वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे. नाउ आई नो दैट ये वाले केस के अंदर ए बी सी क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए वन है. बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है माइनस वन. और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म जो अगेन माइनस वन. तो यहाँ पे आई होप दिस पार्ट इज विजिबल. या शुड बी विजिबल. तो यहाँ पे ये माइनस बी है. सो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज वन इट सेल्फ माइनस फोर इंटू ए इंटू सी माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए. मतलब टू ही हो जाएगा. टू वन जा टू. ठीक है. तो इसको क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन हो जाएगा. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ऑफ माइनस फोर मतलब वन प्लस फोर या फाइव डिवाइडेड बाय टू. Now, if you have seen our 7 most interesting numbers वाला एक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था couple of days back, you would have seen this part somewhere. 1 plus root 5 by 2, 1 minus root 5 by 2, राइट. तो ये होता है गोल्डन रेशियो 1 प्लस रूट 5 बाई 2. राइट. सो ये गोल्डन रेशियो कहीं पे देखा होगा एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी आवर आंसर हियर. व्हाई आंसर मतलब फर्स्ट वन पार्ट ऑफ द आंसर. व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड दैट x तो ग्रेटर देन 0 है ना. तो x या तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 है या 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 है. अब रूट 5 जो है वो 1 से बड़ा होगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4. सो रूट 5 विल बी 2 पॉइंट समथिंग. तो अगर मैं 1 में से 2 पॉइंट समथिंग निकाल दूं तो नेगेटिव आ जाएगा. तो x का वैल्यू क्या आ जाता है मेरे पास? x will be positive, that's why x will be 1 plus root of 5 divided by 2. तो ये मेरे को यहाँ पे मिल जाता. ठीक है. अभी मेरे को क्या करने का है? x तो मिल गया और ये 3x plus 2 था. तो x raised to 4 का वैल्यू मेरे को ये मिल रहा है. मेरे को क्या निकालने का है? 2x raised to 4 निकालने का है ना. So I'll simply say that this is nothing but 2 times 3x मतलब 3 into 1 plus root 5 divided by 2 plus 2. ठीक है. So 3x plus 2 x के जगह पे ये डाल दिया. Now if I just expand this, ये 2 cancel हो जाएगा. तो this term will be as it is. 3 plus 3 times root 5 मिलेगा plus 2 into 2 तो ये बन जाएगा 4. तो मेरा आंसर आ जाता है 7 plus 3 root 5. The correct answer is option D. ठीक है. So D becomes my correct answer. Now of course if you were good at these things, you would have been able to solve these questions very quickly. ठीक है. तो ये इतना मतलब आई हैव रिटन इट बिकॉज अगेन आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू आर न्यू टू प्रिपरेशन. अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट रियली बी दैट वेल वर्स्ड कि मतलब एकदम चमक जाए सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स. बट यू कैन स्किप अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट एग्जिस्ट. ठीक है. Alright, so if there are no doubts in this one, we'll move on to the next question. I hope it's clear to everyone.
ठीक है, चलो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. Again, I'll stay here for maybe 15, 20, 30 seconds and then we can start with the solution. Again, बहुत ही मेन स्ट्रीम सा क्वेश्चन है, राइट? दिस इज नॉट एग्जैक्टली सरप्राइजिंग क्वेश्चन कि अरे ये क्या होगा पता ही नहीं चला, इट वाज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली ऑफ एंड सो ऑन. तो ऐसा नहीं है. दिस इज अगेन अ वेरी मेन स्ट्रीम क्वेश्चन दैट आई हैव शेयर्ड. सो हैव अ लुक एट इट एंड देन वी कैन स्टार्ट आफ्टर मे बी 15, 20, 30 सेकंड्स में इसको स्टार्ट कर सकते हैं. या ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. So again, a very mainstream question, right? X minus y minus z थोड़ा सा अलग है. This is slightly different than what we are used to seeing. And why is it slightly different? Because ये negatives आ जाते हैं. If all of them would have been positive, x plus y plus z equal to 25, I am sure you would have directly gone ahead and used the formula that some of you might already be knowing, right? So all those things would be more or less known. If अगर x plus y plus z equal to 25 होता, then you would have said अरे 27 C2 मेरा आंसर है करके, right? But it is not the case here. X minus y minus z equal to 25 दिया हुआ है. Also we know that there are some conditions here. X has to be less than or equal to 40, y has to be less than or equal to 12, and z has to be less than or equal to 12. So all three things are known to us in this particular case. ठीक है? Now let's see what exactly can we do with this. अब यहाँ पे I can say this thing, right? X equals y plus z plus 25. तो ये वाला पार्ट तो आई कैन डेफिनेटली से इज गोइंग टू बी ट्रू. सो x इज गोइंग टू बी 25 प्लस समथिंग. वी ऑल्सो नो दैट x y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब x y z क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके x y z के वैल्यूज हो सकते हैं. We also know what is the maximum value that x can take, what is the maximum value that y can take, what is the maximum value that z can take. So 40, 12, 12 ये maximum values हैं जो हो सकते हैं, right? So x equals y plus z plus 25 ये मेरे को दिया हुआ है. Now I know that x has to be less than or equal to 40. मतलब x जो है ना maximum 40 हो सकता है. ठीक है. x minimum कितना हो सकता है? That's a very interesting question. X minimum कब होगा? जब y is as low as possible, z is as low as possible. अब x y z को पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है. सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो हमने यहाँ पे लिखा है? 1 लिखा है ना. तो y का सबसे छोटा वैल्यू कैन बी 1, z का सबसे छोटा वैल्यू कैन बी 1, विच मीन्स दैट x का मिनिमम वैल्यू कैन बी 27. ठीक है. तो ये एक पार्ट है. विल अगेन लुक एट इट अ बिट इन अ डिफरेंट मैनर आगे जाके, बट अभी के लिए x मिनिमम इज 27. What is the maximum value that x can take? वो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है. x has to be less than or equal to 40. तो x का मैक्सिमम वैल्यू 40 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. अब इसका ही काउंटर पार्ट यहाँ पे देख लो. तो यहाँ पे y प्लस z का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अगर y और z को मैं 1 1 ले लेता हूं तो y प्लस z का मिनिमम वैल्यू बिकम्स 2. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y प्लस z? अगर मेरे को x को 40 बनाने का है और 25 ऑलरेडी इधर है, तो y प्लस z का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 15. ठीक है. सो y प्लस जेड कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम 2 टिल 15. 2 से लेके 15 तक सारे वैल्यूज y प्लस जेड ले सकता है. फाइन. बट देर इज वन स्मॉल कंडीशन. y ना 12 के ऊपर हो ही नहीं सकता और z भी 12 के ऊपर नहीं हो सकता. सो दैट इज बेसिकली द लिमिटिंग कंडीशन दैट वी हैव. तो अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है. राइट ना y प्लस जेड इक्वल टू 2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि y x y z आर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला हुआ है. राइट. सो y प्लस जेड अगर इक्वल टू 2 है तो क्या क्या मेरे पास सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इसके अंदर? सो y जो है ना वो 1 हो सकता है, z 1 हो सकता है. क्या y 0 और z 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज y हैज टू बी पॉजिटिव ना. तो y तो 0 हो ही नहीं सकता. तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट y कैन टेक इज 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू z कैन टेक इज 1. y प्लस z 2 का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विच इज 1,1. तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. y प्लस z इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं तो क्या हो सकता है? y का सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो जब y 1 होगा तो z 2 हो जाएगा. y can become 2 as well. y 2 होगा z 1 हो जाएगा. y cannot become 3 because अगर y 3 हो गया तो z जो है ना वो 0 बन जाएगा. एंड z cannot be 0 because z also has to be positive. तो यहाँ पे मेरे पास दो ही सॉल्यूशन बनते हैं. नेक्स्ट इज y plus z equals 4. अगेन y can be 1,3 सॉल्यूशन सेट हो सकता है. y can be 2 so 2,2. y can be 3 3,1. y cannot be 4 0 हो जाएगा. तो तीन सॉल्यूशन हैं. ऐसे करते 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 अगर जाएंगे ना हम लोग यहाँ पे तो 12 तक तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो टिल द टाइम y becomes 12 मेरे को कोई इशू नहीं है लाइफ के अंदर.
ठीक है। सो y अगर 12 हो जाता है, लेट्स से z का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 1 है रहेगा ना, तो सबसे छोटा सम यहाँ पे 13 बनेगा। और यहाँ पे क्या सोल्यूशन सेट होगा, 1,12, 2,11, 3,10, ऐसे करते करते टिल द टाइम यू रीच 12,1। तो ये बन जाएंगे मेरे 12 सॉल्यूशंस। सिर्फ y को गिनो, y 1 से लेके 12 तक जा रहा है ना, सो 12 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल यहाँ पे। y प्लस जेड इक्वल टू 14 में क्या होगा, यहाँ पे सॉरी y प्लस जेड इक्वल टू 14 में क्या होगा, यहाँ पे थिंग्स विल चेंज बाय अ लिटिल बिट, छोटा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे y 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि y जैसे ही 1 हो जाएगा z विल बिकम 13, बट z कैन नॉट बिकम ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 सोल्यूशन होगा ही नहीं। 2,12 से मेरा सोल्यूशन सेट स्टार्ट होगा। सो 2,12, 3,11, ये सोल्यूशन सेट बनेगा। कब तक बनेगा, दिस सोल्यूशन सेट विल गो ऑन टिल 12,2। 13,1 फिर से नहीं होगा, बिकॉज y कैन नॉट बी 13। तो यहाँ पे कितने केसेस बनते हैं, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, 2 से लेके 12 तक मतलब 11 केसेस बने। तो यहाँ पे फॉर y प्लस जेड इक्वल टू 14 11 केसेस बनेंगे। सिमिलरली अगर y प्लस जेड इक्वल टू 15, जो मेरा सबसे लास्ट इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर तो y प्लस जेड का वैल्यू जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल बेसिकली स्टार्ट विथ 3,12, देन आई विल गो टू 4,12, और ये चलता जाएगा टिल द टाइम आई रीच 12,3। तो सारे नंबर्स दैट y कैन टेक फ्रॉम 3 टू 12, दोस विल बी अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन सेट। सो 1 से 12 तक अगर मैं गिन रहा हूँ और 1 2 नहीं ले रहा हूँ, तो बचे हुए जो 10 नंबर्स है ना, वो सारे मेरे सॉल्यूशंस बन जाते हैं। नाउ व्हाट इज माय आंसर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 12 प्लस 11 प्लस 10। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल द टाइम आई रीच 11 प्लस 12, ये एक पार्ट, प्लस 11 प्लस 10। ठीक है। अब इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है, ग्रेट, अगर नहीं पता यू कैन एड इट मैन्युअली, बट फॉर्मूला पता होगा तो बेटर। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज सिंपली गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस पार्ट विल बी नथिंग बट 12, 12 तक कर रहे हैं तो 12 इंटू द नेक्स्ट नंबर 13 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 11 प्लस 10 विल बिकम 20। तो ये क्या बनेगा, 2 6s are 12, 13 6s are 78, plus 21 88 98 99। ठीक है, so the correct answer here will be option B, that is 99। Again, I hope this is clear. If there is something you're not able to understand, please let me know. We can look at it again. All right. Perfect. ठीक है, so I'll show you the next one. This is a very interesting question. इसके अंदर एक छोटा सा concept है that I will teach you. See if you are able to get it, and you can try it out on your own as well, right? So I would strongly encourage you to try that particular bit. बहुत interesting concept है, one of my favorite concepts to teach. Uh, Basically quadratic equations, curves and graphs. So that is basically one of my favorite concepts. बहुत interesting concept है. So try this once and see what you are able to get, and then I will try to solve it with you as well. साई किरण और कोई अप्रोच नहीं है ऑनेस्टली, देयर इज नो अदर अप्रोच टू सॉल्व द प्रीवियस वन, बिकॉज इफ यू लुक एट इट ना, there is a condition that has been given. So till 12 you need not write down all the cases. You will know that 1 1 1 2 2 1, those things you will be able to get intuitively with practice. So till 1 to 12 you will be able to manage completely, and after that the last two cases you will have to do manually. So there is no other way of applying a shortcut for the previous one, because there are conditions that have been there. If it would have been simply x plus y plus z equal to 25, there would have been a shorter formula, 27c2, as I was saying. Okay, so there you would have been able to get the answer very quickly. Otherwise you will not be able to. What should be the ideal time to solve question number 2 if such question appears at the cat? Not more than 1.5 minutes, Shubham. 1.5 to 145 max, not more than that. I would not say 2 minutes, because the whole point is for you to understand patterns and develop that intuition that this is basically going to be 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so. So you will see a lot of these patterns even as you progress, काफी सारे दिखाई देंगे. So make sure that you are tuned into all these patterns that exist. ठीक है, तो यहाँ पे first thing we have to do, again as I mentioned, first thing bracket में कुछ तो दिया हुआ है, try to simplify it, right? Leap of faith. So I'll just open this bracket. So I'm going to get n square, n into n is n square, n into minus 10 is minus 10n. So I'll just write down all the terms. Minus 5 into n is minus 5n, and minus 5 into minus 10 is plus 50. ठीक है, minus 3n
and minus 3 into minus 2 is plus 6, less than or equal to 0. Right? So this is basically what we do. Now, n square minus 10n minus 5n is minus 15, minus 3 is minus 18n, plus 50 plus 6 is plus 56, less than or equal to 0. Now, if you are very good with numbers, what do you have to find out? I want to find two numbers whose product, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इज 56 and the sum of the two numbers should be 18. ठीक है? So two numbers whose product is 56 and whose sum is 18. That is what I need to find out. अब अगर मेरे को पता है फैक्टर्स क्या है या 18 को if I simply sit and split, then I will be able to manage it easily. ठीक है? So यहाँ पे sum is 18, right? So 17 1, 16 2, 15 3, 14 4, 14 4s are 56. So यहाँ पे you will get n minus 14 into n minus 4 should be less than or equal to 0. ठीक है? Till here I hope you are able to get it. अगर नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा फाइट है लाइफ के अंदर, it's very difficult for you to figure it out, you can use this formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a, but this will be unnecessarily time consuming. तो थोड़ा सा if you develop sense of numbers ना, 56 को कैसे split कर सकते हैं, तो 414 साई किरण is correct. So that is what you have to arrive at intuitively. जैसे you get 4 and 14, you can simply do n minus 14 n minus 4. तो ये वाला try to jump from here to here quickly, right? So this is basically where your practice will. Now I'll show you one small bit. Abhi, let's say for example this is basically the x-axis. Okay? Now this is basically the x-axis. Now I tell you there is an equation that exists. There is an expression. X minus 14 into x minus 4 equal to or whatever. This is an expression. Now if you draw this entire graph, na, quadratic equation, quadratic expression, right? How will this graph look? It will be a U-shaped curve. Fine. And again, this will come to you with practice. Now, this is cutting the x-axis at two places. Now, when is it cutting the x-axis? It is cutting the x-axis when the y-coordinate becomes 0, ना? मतलब whenever this becomes 0, वो x-axis को cut करेगा. कहाँ पे 0 बन रहा है? अगर मैं x equal to 4 डाल दूं, तो 0 बनेगा. अगर मैं x equal to 14 डाल दूं, तो 0 बनेगा. Right? So at 4 and 14, this entire expression will become 0. And that we say are the roots of this particular expression. Okay. So 4 and 14 will be the points where it will cut the x-axis. And this entire curve that I'm drawing, this is basically all possible values of x minus 4 into x minus 14. Okay. So all possible values, if I plot, then I'll get this U-shaped curve. Right? अब don't get into the complexity की U shape कहाँ पे आता है and N shaped कहाँ पे आता है, those things. If the coefficient of x square is positive, you will get a U-shaped curve. If the coefficient of x square is negative, you will get a N-shaped curve, उल्टा U-shaped curve. ठीक है? But अभी के लिए don't get into that. यहाँ पे just understand that normal convention क्या है? Like this you will design, you will get 4 and 14. Right? Now what do you have to find out? We have to find out those values of n जहाँ पे this is less than or equal to 0. Now ये सारे positive है ना? I'll just use another pen. Yeah, all these values are positive. These entire value set of values will be positive. These two will be 0, and the ones below, these ones will be negative. Okay? So where all are you going to get less than or equal to 0? So from 4 to 14, if you go, 4 it is 0, 5 it will be negative, 6 it will be negative, and so on till the time you again reach 14 where it will become 0. So from 4 to 14, whatever integers are there, all of them will give you value either equal to 0 or negative. So the total number of cases will be from 4 till 14, that is 11 possible cases. So for all, for how many integers n, the answer is going to be 11 here. From 4 till 14, everything will give you, or everything will satisfy this inequality that has been given to us. Okay? This is a very important concept, by the way. In fact, I remember there was one question in CAT 2022, if I remember correctly. One of the few questions that I got wrong in my slot, and very, very nice question. As in, usme you had to draw one curve like this, one curve like this, and then figure out which one will would have satisfied both. If I remember correctly, it was CAT 22 and not 23. So yeah, mostly I think 22 you were, right? So this you have to understand. This where if you are able to understand, brilliant. It will make your life much easier. And this has like fantastic applications, specifically in terms of polynomials. So it's a very nice concept. Okay? Anything you didn't understand in this?
Any issue? All right. So I'll show you the next question. Those of you who have any problem with the previous one, let me know. Those of you who want to solve the next one, you can start. So I'll give you another 10-15 seconds to get a head start on this question. All right. So let's get going with this one. So there are two functions. As soon as people look at f of x, g of x, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं. Because functions is something that scares people a lot. But genuinely speaking, it's not a very difficult topic. Right? To be very honest, what the difficult topic नहीं है. So don't worry about it. All your quadratic equations के concepts will be applicable here. And typically it is going to equate the two equations that are there. ठीक है. Can I explain the last part? So 4 and 14, I hope you understood here. So from 4 till 14, all these are negative. Because this will represent all the possible values of this one. If you have not understood this, what I would suggest for you is to draw equations and see. So I'll give you few sample equations for all those of you who want to practice this. Try this. X square plus 4x plus 4x try kar lena. X square minus 2x minus 48 ये वाला प्लॉट कर लेना. X square plus 3x प्लस 10 ये प्लॉट कर लेना. ठीक है. सो प्लॉट दीज थ्री. चलो एक और देता हूं. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x लेट्स से एंड प्लस 8. चलो ठीक है. और माइनस 8. ठीक है. ड्रॉ दिस. तो ऑल दीज फोर आर देयर ना. सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ दिस. ये सबका ग्राफ ड्रॉ कर लेना. Plot एक एक points. X equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4. Plot it on a graph. Or if you want, you can just use this nice website called Desmos. If you have used this, then you know what I'm talking about. Those of you who haven't, एक बार just check कर लेना. Draw it, plot it on Desmos and see what it looks like. And you will understand what I'm talking about. So all the values of x or all the values of this expression will be here. उसमें से I am saying that these will be the ones that will be negative, less than or equal to 0 चाहिए ना मेरे को. So this will be less than or equal to 0 and these two will be 0. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So 11 values will be when it will be either 0 or less than 0. So that is basically the thing. ठीक है. So try this. एक के अंदर just try this. ये चारों ग्राफ में एक बार प्लॉट करके देख लेना. आई एम श्योर यू विल फिगर आउट ये क्या है कर. ये जानबूझ के मैंने ये चार दिए हुए ग्राफ्स. जस्ट चेक इट वंस. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, एक कमेंट डाल देना यहाँ पे. आई ट्राई टू हेल्प यू विद दैट. ठीक है. चलो लेट्स लुक एट दिस वन. f1x इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 11x प्लस n एंड f2x इक्वल टू x. तो मेरे को क्या करने का है. f1x इक्वल टू f2x दिया हुआ है ना. एंड उसमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n. सो ये n का मेरे को लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का. So in this particular case, what will I do? They have told us already कि ये equal है करके. I'll just equate them. So x square plus 11x plus n will be equal to x ना. So I'm going to get x square plus 10x plus n equals 0. So this is basically where these two will be equal. These two functions will be equal. I want to maximize n when this has two distinct real roots. Now I know that for any quadratic equation, the roots are given by minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो ये फॉर्मूला से मेरे को रूट्स मिलते हैं. नाउ इफ b square is equal to 4ac, if b square equals 4ac, ये तो जीरो बन जाएगा ना. तो my roots will become equal. ठीक है. इफ b square is less than 4ac, तो ये रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो रियल नहीं होगा. तो my roots will be complex, not real. तो रियल कब होंगे रूट्स. रियल भी चाहिए, दो डिस्टिंक्ट भी चाहिए.
So when will that happen? When b square is greater than 4ac. Whenever b square is greater than 4ac, my roots will be distinct, my roots will be real. So in this case, what is b? B is 10. So 10 square should be greater than 4 times a times c. So 4 into 1 into n. In other words, 4n should be less than 100. N should be less than 25. What is the largest positive integer that is less than 25? Straightforward ho gaya. Largest positive integer that is less than 25 will be 24. And so the correct answer here will be 24. All right. Let me know if this part is clear. Very easy. ये वाला part याद रख लेना. If b square is equal to 4ac, then this part entire thing root के अंदर वाला 0 बन जाता है. तो मेरे roots क्या हैं? माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू ए. तो इक्वल हो गए रूट्स मेरे. अगर बी स्क्वायर 4ac से कम हो जाता है, देन आई एम बेसिकली सेइंग दैट द रूट के अंदर का टर्म बिकम्स नेगेटिव. अब अगर वो टर्म नेगेटिव है, तो भाई रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स तो डिफाइंड नहीं होता ना, रियल नहीं होता. तो हम बोलेंगे उसको कॉम्प्लेक्स. एंड रियल चाहिए तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन. So in this case, you will get n less than 25 पे things getting satisfied. Fine. Cool. So now let's look at this one. इसके अंदर trial and error है. There is no amazing way or shortcut to do this. This has got a lot to do with your instincts. So if you have good instincts towards numbers, if you are very careful with the term integers, ये वाला easily solve हो जाएगा. नहीं तो you might end up making some mistake because this was a theta question, right? So there were no options for this one, I believe. So you were completely on your own. And if you don't read integers, you might be tempted to mark 0 because 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 will give you 0 as the answer. But you have to be a bit careful. Okay? And all of you who are liking our content, make sure that you are sharing it with your friends as well. I am seeing that the subscribers have been increasing over the last few days. So I take it as a positive sign personally. I would again encourage you to share it across your, if you are a part of any student groups, if you are a part of any institute or something, because यहाँ पे मतलब we are not really charging people to attend these sessions. So whatever they are getting is a nice bonus. So if you think that this is going to benefit people, do share it with others as well, so that we get a larger audience to address. ठीक है? So that gives me also a lot of enjoyment. I look at a video and वहाँ पे अगर 50 views है तो then I also feel bad about it. तो that's one thing from my side. ठीक है? चलो, let's look at this one. Now a, b, c, d are integers such that a plus b plus c plus d is 30. Now this integers is a very important part. ठीक है? And you have to find the minimum possible value of a minus b the whole square, a minus c the whole square, and a plus d the whole square का sum. ठीक है? That is what we need to find out in this particular. Now here what is going to happen? What I am saying here is a is one term and b, c, d are three other terms. I need to minimize इसके बीच का difference, इसके बीच का difference and इसके बीच का difference. ठीक है? I need to minimize the difference between a and each of these other three terms because square है. Now अगर a और b का बीच का difference बढ़ता जाएगा, even if it is on the negative side, the square will be positive. ठीक है? So I have to ensure that a minus b is as small as possible, a minus c is as small as possible, and a minus d is as small as possible. अब वो as small as possible कब होगा? When a is very close to b, a is also very close to c, and a is also very close to d. So जितना ज्यादा a will be closer to b, c, and d, उतना कम will be the difference, which will mean that उतना कम will be the square, right? So that is basically the logic here. Now if I am saying that a minus b the whole square, a minus c the whole square, a minus d the whole square, ये वाला अगर यहाँ पे दिया हुआ है, and I need to make them as close as possible. See, the obvious answer should have been 7.5, 7.5, 7.5 and 7 point. But ये integers नहीं है ना, these are not integers. तो मेरे को इंटीजर चाहिए, तो मेरे को क्या करने का है? मेरे को सब 7 8 के आसपास लेके आने ना इंटीजर्स. इफ माय इंटीजर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर बेसिकली गोइंग टू बी ऑल 7s एंड ऑल 8s के बीच का मेरे को कुछ तो चाहिए, और मेरे को बनाना है 30. तो कैसे बनाऊंगा? आई विल टेक 7 7 8 8. ठीक है? 7 7 8 8 is what I would be interested. Now I can either make a7 or a8 and see what happens.
अगर a 7 बन जाता है the other integers are 7 8 8, और अगर a 8 बन जाता है the other integers are 7 7 and अभी यहाँ पे 7 minus 7 0, 0 square is 1, 7 minus 8 minus 1, minus 1 square is 1, so I'll just write it here, 0 plus 1, 7 minus 8 minus 1, minus 1 का square is again 1, तो ये 2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 8 minus 7 1, 8 minus 7 1, 8 minus 8 0, 1 square plus 1 square plus 0 square will again be, so whatever you do in this case, the minimum value is going to be 2. If you even change things by a bit, if you make one of them 9, let's say for example, and you make the other three 7, let's say, then you are going to get 9 7 7 7. Then the issue will be 2 square 2 square 2 square. So the gap between these terms will be 2. Even if you take 1a as 7, 7 minus 7 0 hoga, 7 minus 7 0 hoga, but 7 minus 9 will still be 2. So again you will get 4, 2 square ho jayega. So the best way of doing this is to take all the 4 terms as close as possible to each other. All right, I hope this is clear. This was a very easy question. Intuitively, you would have managed this particular question. ठीक है, great. चलो, yeah, we'll move on to the next one. And if there's any doubt, let me know. I'll try to address it as well, so don't worry about it. Yeah, even if we go ahead, I'll come back and I can explain it to you, maybe after this question or something. So कुछ भी doubt है तो just document it so that I know that there is something you are not understood. And if you have understood everything, then put that as well. Even that will help me understand that you have understood. ठीक है? So again, there's a functions question here. Again, you can take 30-40 seconds and then we can start with this. So I'll just read the question till then. F of x, right? अब ये functions का था ना, functions is also a very interesting topic. Honestly speaking, I was not very technically good at algebra. So when I was a student, when I was preparing for the CAT, this was what, 15 years back. When I was preparing for the CAT, उस time पे I did not really know कि algebra के अंदर इतना सारा techniques है या इतने सारे concepts exist करते हैं. I was like one of any of you. I knew that quadratic equation का कुछ एक concept है. I knew that अच्छा ठीक है कुछ basic चीजें होती है जो मेरे को पता होनी चाहिए and so on and so forth. But when I started teaching algebra, that is basically when I realized that there are a lot of nice things about algebra that exist. One of the things वो quadratic का जो graph था, I never understood it as a candidate. But when I started teaching, I understood कि अच्छा ये ऐसे होता है. Right, so those kind of things you will have to develop, and वो एक बार develop हो जाएंगे, you will be supremely confident with algebra, उतना I can vouch for it. So it's a matter of 5 days 1 week, एक हफ्ता बैठ के and try to teach someone algebra. Think about it, if you were taking a session on algebra, how would you teach it? That is basically very important. ठीक है, चलो मधुरा, thank you, thanks for the comment. Right, so let's move on to this one. F of x is 5x plus 2 upon 3x minus 5. G of x is something. अब ये फंक्शन देख के इसको छोड़ मत देना. Just try to see what this is. Whenever you get something like this ना, this is going to be the easiest question of all time. इससे easy question function में मिलेगा ही नहीं. मतलब you show me an easier question than this in functions and I don't know, solve it also, right? Don't just show it to me, right? So ये वाला question सबसे easy question होगा function के अंदर. Now in this context क्या करना है? F of 3 निकालने का है. Now that becomes the input for the next function. Whatever output you are going to get, that becomes an input for this. So functions कुछ नहीं होते, एक input output होता है. There is a machine, let's say, उसमें हम कुछ भी डालेंगे, you are going to get an output. So you put dirty clothes in the washing machine, it will give you clean clothes. Function भी वही है. मेरे पास एक कैलकुलेटर जो सिर्फ एक ही काम करता है. अगर मैं x इक्वल टू 1 डाल दूं, मेरे को वो 7 बाय माइनस 2 लिख के दिखाएगा. अगर मैं x इक्वल टू 2 डाल दूं, मेरे को 12 लिख के दिखाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, सो दैट इज बेसिकली व्हाट फंक्शंस आर. तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करने का है, सिर्फ वैल्यू डालने का है. तो f ऑफ 3 पहले निकालेंगे. सो g ऑफ f ऑफ 3, ठीक है, 1. तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे. इसका वैल्यू क्या मिलेगा? f ऑफ 3 है, तो f के जगह पे 3 डाल देने का. तो अगर f ऑफ 3 निकालने का है, दैट विल बी 5 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस 5. तो ये क्या बनेगा? 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 4.
तो ये वाला ब्रैकेट है ना एफ ऑफ 3, इसका वैल्यू इज 17/4. नाउ आई वांट टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ f ऑफ 17/4. दैट्स इट. अब f ऑफ 17/4 निकालने का है. सेम मशीन इज देयर. अब x में की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 17/4 डाल दिया. तो f ऑफ 17/4 क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 2. 5 इंटू 17/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x ना, 3 इंटू 17/4 माइनस 5. बहुत ही यूजलेस सा मशीन है. इसको एक ही काम आता है, आप जो भी वैल्यू डालोगे ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके न्यूमरेटर में डाल देगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके 5 सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में डाल देगा. वही वो मशीन करता है और कुछ नहीं करता. मोस्ट यूजलेस मशीन एवर. ठीक है, बट इट स्टिल एग्जिस्ट. अब ये 5 इंटू 17 विल गिव मी 85/4 प्लस 2. एंड यहाँ पे 3 17s आर 51/4 माइनस 5. नाउ इफ आई टेक 4 यहाँ पे, जो एलसीएम लेके करते हैं, 4 अगर यहाँ पे ले लिया, 4 2s आर 8. माय न्यूमरेटर बिकम्स 93/4 and my denominator becomes 5 4s are 20. 51 minus 20 is 31 divided by 4. ठीक है, अभी डिवाइडेड बाय 4 दोनों जगह से हट जाएगा. तो 93/31 बचा. 31 3s are 93. तो घूम फिर के हम लोग फिर से वहीं पे आ गए, राइट. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 93/3 31 का वैल्यू 3 आ जाएगा. तो इसके जगह पे आई एम राइटिंग g ऑफ 3. नाउ g ऑफ 3 क्या होता है, g ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. एक और यूजलेस मशीन आ गया. x डाल दो तो x स्क्वायर निकालेगा, 2x निकालेगा, 1 में से माइनस कर देगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बना देगा. अगर 3 डाला तो इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1. तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 6 माइनस 1, 9 माइनस 7 विल गिव मी द आंसर एज 2. ठीक है, सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन. तो फंक्शंस का क्वेश्चन देख के डर मत जाना. फंक्शंस जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, सो आई एम श्योर दैट मेनी पीपल वुड हैव ट्राइड टीचिंग यू फंक्शंस, एंड सम ऑफ देम माइट हैव गॉटन इनटू ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, लॉगरिथमिक फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ये सब में इतना घुस जाते हैं ना कि बेसिक क्वेश्चन मेरा उड़ जाता है फिर उसके बाद. ठीक है, सो डोंट गेट इनटू, डोंट make it don't get confused by looking at those things. Yeah, Gaurav, you have to take the cat again, right? So basically whenever we look at these kind of things, we forget कि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है चीजों को, राइट. सो डोंट गेट इनटू अ लॉट ऑफ थियरी, स्पेशली इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट, क्योंकि जितना ज्यादा फालतू थियरी पढ़ोगे उतना यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन याद रख लेना, यू शुड बी फाइन. ऑलराइट, चलो, आई होप दिस इज क्लियर. आई होप Madhura, this is a cat question. It is not a cat level question. This is a past cat, actual past cat question. ठीक है. Now, of course, because this is my first algebra session for the daily drill, थोड़ा लेवल नीचे रखा हुआ है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे कंपेयर टू दिस, सो डोंट वरी अबाउट. ठीक है, वन मोर फंक्शंस क्वेश्चन. यहाँ पे आई हैव चेंज द ब्रैकेट्स फॉर it to be easier for you to do. I think it has not rendered properly. I'll just change it from the back end. So it was properly done in the test, right? So test के अंदर it would have been properly rendered. यहाँ पे शायद मेरा सेव नहीं हुआ. Fine, I hope it is better now, better visible now. Perfect. ठीक है, सो लेट f of x equals x square and g of x equals 2 raised to x. तो f of x एक मशीन है, नंबर दे दो स्क्वायर करेगा. g of x एक और मशीन है, नंबर दे दो 2 का पावर निकाल के दे देगा. फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ f of g of x plus g of f. सो लुक एट द ब्रैकेट्स वेरी केयरफुली. नहीं तो हम लोग डायरेक्टली घुस जाते हैं, वी स्टार्ट डूइंग f of g of x plus g of f of x, ये करते हैं. वो नहीं करना है. मेरे को f of g of x plus g of f of x पहले निकालने का है, फिर उसका f फंक्शन का वैल्यू निकालना, राइट. सो इट्स वेरी सटल. यहाँ पे आई थिंक वो ब्रैकेट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस. एक्चुअल कैट के अंदर ऑल ऑफ देम वर राउंड ब्रैकेट्स, सो इट वाज वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज्ड. Thankfully cat did not give you a random option which could have been right as well. तो वो I think वो थोड़ा सा they were lenient towards you. But if I would have been the paper setter, I am much more evil than your regular cat paper setters. ठीक है, let's see what happens here. ठीक है, so अभी क्या करने का यहाँ पे f
ऑफ, ये वाला तो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पहले मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने का है, उसमें मेरे को ऐड करने का है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड उसका एफ फंक्शन निकालने का, दैट्स इट। सो इन दिस केस जी ऑफ एक्स निकालने का है फॉर एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये फंक्शन मेरे को टू रेस टू वन दे देगा। सो दिस विल बेसिकली बिकम, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर बेनिफिट, टू रेस टू वन करेंगे तो टू ही आ जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला भी कर लेते, चलो लगे हाथ। सो एफ ऑफ एक्स निकालने का है, एक्स अगर वन डाल देता हूँ ये मशीन के अंदर तो उसको स्क्वायर कर देगा तो ये वन ही बनेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। Now I have to figure out what is f of 2. So 2 square, that is 4. And what is g of 1? 2 raised to 1, that is 2. तो मेरे को निकालने का है f of 6. f of 6 क्या होता है? 6 square. तो मेरा आंसर हो जाएगा 36. Very easy question. And again, past cat questions. ये सब आप लोग past question, cat question ही कर रहे हैं. So all the questions today are from past cats. तो कैट इजी भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कैट हमेशा डिफिकल्टी होता है, कैट कैन बी इजी एज वेल। एंड इवन लास्ट ईयर इफ यू लुक एट इट, आई टुक इट इन द थर्ड स्लॉट, सो आई एम इंक्लाइन टू से दैट थर्ड स्लॉट का क्वांट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। एम्पिरिकली डेटा भी वही बोलता है कि थर्ड स्लॉट का क्वांट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। बट स्लॉट वन एंड टू इफ यू लुक एट इट ना, चार पांच क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डुएबल थे। सो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा टेस्ट अक्रॉस स्लॉट्स वाज डिफिकल्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो 36 इज द आंसर। एंड व्हेन आई सेड ना कि आई कुड हैव बीन इविल, तो मैं क्या करता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोस ऑफ यू जिनको समझ में आ गया है, आई वुड हैव गॉन फॉर दिस प्लस दिस, राइट। तो इसका क्या होता है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वन कितना, टू हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा फोर एंड एफ ऑफ फोर हो जाएगा 16। तो इफ आई वेर द पेपर सेटर ना, मैं एक ऑप्शन डालता 18, yeah, okay, so the paper setter had done it, I didn't notice, great। So 18 भी एक ऑप्शन है। So some of you who might end up doing this first and then adding this, उनको 18 मिल जाएगा आंसर, and you might actually end up marking 18 and go ahead, and then you will realize कि अरे ये ब्रैकेट तो मैंने देखा ही नहीं था। So these kind of things might happen during the test, तो ये सब चीजों में मत फंसना रैंडमली, नहीं तो फ्री के आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे। तो डोंट लेट दैट हैपन, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुल, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Let's move on to the next one. All right, so the toss has happened for those of you who are interested. ठीक है, so again, ये वाला question है, I think it is rendered properly. Minimum possible value of sum of the squares of the roots of the equation is what? Sum of the squares निकाल, ठीक है। Just try it out once on your own, and then we will have a look at the solution. So 2 more questions to go. So we should be done in the next 10 minutes, I think. 10 to 15 minutes we should be done. तो यहाँ पे अगेन आई विल ट्राई टू डू समथिंग, सो समवन मेंशन है यहाँ पे, Shubham just put a comment saying some time back, put a comment saying please take live sessions for explaining concepts of quants. Shubham, I have been doing it. So honestly, there is a playlist that I have on the channel which is called Quant Formulas, Fun with Quant Formulas. I think that is what the playlist is called. But sadly, people have not been watching it, right? So I don't know if I should be doing concepts of quants, but मतलब response नहीं था. Of course, if that gets more response, then I am definitely game for taking live sessions as well. In fact, I have something in the pipeline. So in the coming week, sometime you might see something happening on logarithms, right? So as I was mentioning logarithms last time, I intend to do a masterclass kind of a thing on logarithms, so we can have a nice hour-long session wherein I will take, where I will teach you logarithms from the very basics till cat level questions. That is basically what I intend to do. If people like that kind of content, then definitely I would be game to doing more such sessions as well. So that is over and above this daily drill that we are. Okay? Yeah, even I want to do it, matlab. But see, if there are no people now, motivation chala jata, that is the problem. So, but I'll definitely want to do it because that is a personal project. I enjoy teaching logarithms to people. That तो वो है logarithms, even the ones graph वाले जो होते हैं, quadratic equations, algebra in general. I genuinely like these concepts. So that's why I might as well do it. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं the minimum possible value of the sum of the squares of the roots of the equation. हाँ, यहाँ पे I could have done
I could have done an evil thing and put E19 as an option. This is what I think I meant. Yeah, so sum of the squares of the roots of the equation. ठीक है, sum of the squares of the roots निकालने के हैं, and x square plus a plus 3 into x minus a plus 5 equals 0. Yeah, Madhura, glad you like it. I'll definitely continue doing this. I know this is too early to be reacting to views and subscribers and whatnot. But yes, I definitely intend to do a lot more than what we are experiencing right. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 5 इक्वल्स 0. ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है. I want to find the minimum possible value, the sums of the squares of the roots. Now, one thing you can do is you can simplify things and see what happens. Sums of the squares of the roots, normal convention use कर लेते हैं. The roots are generally going to be alpha and beta. ये हमारा denotation है. Sum of the squares of the roots मतलब मेरे को alpha square plus beta square निकालने का है. Now, if you are even slightly well versed with quadratic equations, you will know that you will know that sum of the roots होते हैं ना, alpha plus beta, वो होता है minus b by a. मतलब in this particular case minus a plus 3. ठीक है, divided by 1. तो उसको ऐसे रख देते हैं. And product of the roots जो होगा ना, that will be c by a, which will be minus, oh sorry, I'm so sorry. Yeah, Mudra, thanks for that. I hope it does not get you into any trouble. But thank you for doing that. ठीक है, so sum of roots is minus b by a. I'll just write it down for the benefit of people who are not clear with this. तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब जहां पे भी ये रूट्स बनते हैं, देन आई विल से दैट सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाय ए. ठीक है, so sum of the roots minus b by a होगा, product of the roots will be c by a. So in this case, if alpha and beta are the roots of this particular equation, alpha plus beta sum of roots will be minus of a plus 3 by 1 minus b by a. ठीक है, and product of the roots will be c by a, so minus a plus 5 by 1, so minus of a plus 5. I need to find out what is alpha square plus beta square. अब ये कैसे निकालूंगा, ये तो मेरे को डायरेक्टली नहीं मिल रहा. बट हियर इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द algebraic expressions, you will know that this is nothing but alpha plus beta the whole square. ये तो मेरे को मिल सकता है, इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे को alpha plus beta का होल स्क्वायर मिल जाएगा. बट आई विल गेट एन एक्स्ट्रा टर्म ना, एक्स्ट्रा 2a भी मिलेगा मेरे को, राइट, और 2 अल्फा बीटा मिलेगा मेरे को. सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. तो उसको एडजस्ट करने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा यहाँ, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विल गिव मी द सेम थिंग. अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, आई जस्ट हैव टू पुट इट हियर एंड सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इसको अगर मैं ये फॉर्मेट में डाल देता हूं, आई विल गेट माइनस a plus 3 the whole square minus 2 times minus alpha plus beta. एक second. So I'll just try to put the bracket so that it's easier for us to see. 2 times alpha into beta ना, तो minus a plus 5. ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर विल बी द सेम एज a plus 3 the whole square. तो ये बनेगा a square plus 2 into a into 3 that is 6a plus 3 square that is 9. तो ये बनेगा minus 2 into minus a plus 5 will be nothing but plus 2 into a plus 5. तो ये plus 2a बनेगा and 2 5 are 10 बनेगा. तो ये बनेगा a square plus 6 plus 2 8a plus 19. ये बनेगा. अभी मेरे को इसको करने का है मिनिमाइज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर. इसको मिनिमाइज करने का है मेरे को. तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मेरे को ये इक्वेशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना. हाउ विल आई मिनिमाइज दिस इक्वेशन? सो लॉट ऑफ पीपल माइट से a को 0 डालो तो 19 आंसर आ जाएगा, मार्क दिस एंड गो अहेड. दिस इज डेफिनेटली एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, तो ये नहीं करना है. इसको मिनिमाइज करने के 2-3 तरीके हैं, राइट. आई विल टेल यू 2 ways of doing this. See which one you like. One is something known as completing the square. तो अगर मेरे को पता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस विल बी b स्क्वायर प्लस k, ये फॉर्म में अगर आता है, नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ b स्क्वायर? मिनिमम वैल्यू ऑफ b स्क्वायर विल बी 0 ना, क्योंकि b स्क्वायर का वैल्यू 0 के नीचे जा ही नहीं सकता, राइट. सो b स्क्वायर का वैल्यू 0 के नीचे नहीं जा सकता, which basically means that the minimum value of b स्क्वायर will be 0, राइट.
then it will basically tell you that the value will be k. तो अब इसको अगर मेरे को स्क्वायर बनाने को तो कैसे बनाऊंगा? a square plus 8a plus something should give me a perfect square. Now here if you have some knowledge of numbers or some instinct for numbers, you'll be able to manage this. Now I have a square plus 2 into a into something. So 2 into a into 4 है ना, ये 8a मतलब. तो अगर मैं 4 square यहाँ पे डाल दूं, then this will become a perfect square, ये वाला part. So I can write this as plus 3. 19 है ना यहाँ पे, तो a square plus 8a plus 16 plus 3. ये करने से मेरे को मिलेगा a plus 4 the whole square plus 3. Now as I mentioned here, b square plus k है ना, so b square plus k अगर यहाँ पे दिया हुआ है, then this will be a plus 4 the whole square plus 3. So my minimum value becomes, this is one way of doing it, completing the square. The other one, what Shivansh is saying, something similar to that, exactly वही concept है, but वहां पे you might have to use derivatives. ठीक है, derivatives use कर सकते हैं, right? या फिर the easier way is minus b by 2a. Yeah, Shivansh, the answer is 3. ये 19 was a trap answer. The answer is 3. This is the answer. ठीक है, derivatives use कर सकते हैं. Derivatives में a square plus 8a plus 19 है. I'll take the first order derivative. Even if you are from a non-math background, first order derivative लेना आना चाहिए. ठीक है, so a square में क्या करेंगे हम लोग, इसको 2a बना देंगे. So this 2 will come नीचे, that's it, और कुछ नहीं करना है. 8a का डेरिवेटिव 8 बन जाएगा. ठीक है, so this is basically the first order derivative. इसको बनाने का है 0. So a equal to -4 पे इसका या तो मिनिमम वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा. अगेन टेक अ लीप ऑफ फेथ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मिनिमम की तरफ ही पॉइंट करना चाहिए, राइट? a इक्वल टू -4 को इसमें सब्सटीट्यूट कर देना. a इक्वल टू -4 पे यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, एक सेकंड ना, जस्ट सी इफ इट इज विजिबल. या मेरे पास रहेगा. a इक्वल टू -4 है, तो -4 को यहाँ पे डाल दिया. -4 स्क्वायर बनेगा 16. 8 इंटू -4 बनेगा -32 प्लस 19. -16 प्लस 19 विल बी 3. So that is another way of doing it. And as Sai Kiran has mentioned, minus b by 2a is another way of doing it. So minus b by 2a मतलब क्या? -8 upon 2, तो -4. -4 को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, that is basically where the value will become minimum. अब वो मेरे को कैसे मिलता है? Again there is a very interesting concept. I don't want to confuse all of you, but ये वाला जो पार्ट है ना, this is basically the minimum value. ये है मिनिमा. ठीक है, एंड माइनस बी बाय 2a क्या होता है? यही वाला पार्ट. तो ये 8 यहाँ पे जाएगा तो -8 बन जाएगा एंड 2a मतलब 2. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट साई किरण हैज मेंशन्ड इन द चैट. सो दैट्स हाउ वी गेट द डेरिवेटिव वाला पार्ट. either you complete the square or you use the derivative. Anything is fine, either method is fine. You should be good to go even if you know these. And derivative से डरना मत. This is a very easy concept. First order derivative बहुत easily मिल जाएगा. Don't worry about it at all. It's a very straightforward concept. तो वो डेरिवेटिव से करके मेरे को नहीं आता करके डर मत जाना. इट इज मैनेजेबल. ठीक है, सो द आंसर टू दिस वन इज 3. दैट 19 वाज अ ट्रैप आंसर. तो यहाँ पे कोई कोई लोग ना a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 9 a को 0 डाल देंगे और 19 आंसर निकाल देंगे. सो दैट कुड हैव बीन अ ट्रैप आंसर, बट इट इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन टू गो. या लास्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन अ वेरी, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन. 1 by a plus 1 by b equal to 1 by 9. In fact, this is a straight lift from one of the past cats from 2008 and all. वहां पे एक क्वेश्चन था, what I, if I remember correctly, 4 by m plus 1 by n equals 1 by 12. I think that was the question. So again, something similar to that. So all these questions have a similar way of getting solved. So we'll try to see that technique यहाँ पे कि कैसे solve करते हैं इसको, and then we will call it a day. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ जस्ट लुक एट दी स्टेप्स. यही स्टेप्स करने हैं. अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, 1 by a plus 1 by b equal to 1 by 9, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता है ना आपके पास, आंख बंद करके वट एवर आई एम सॉल्विंग उसको वैसे के वैसे सॉल्व करना. यू विल डेफिनेटली गेट टू द आंसर. और अगर उससे आंसर नहीं मिल रहा है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज सिंपल एज दैट. और कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तरीका
जो इसे इजी होगा शायद करने के लिए, एंड आई शो यू वन ऑब्जर्वेशन एट। सो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज 1 बाय 9। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज आई एम सेइंग ये 9 को यहाँ पे ले लेते हैं, ए प्लस बी ऊपर ले लेते हैं, यू विल गेट 9 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए बी, और 9a प्लस 9b इक्वल्स ए बी। आई होप माई 9 एंड ए आर विजिबली डिफरेंट। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ। तो ये 9a माइनस ए बी प्लस 9b इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक इट्स फाइन। अभी फर्स्ट में से ना मैंने a को कॉमन निकाला, तो मेरे को मिला 9 माइनस बी। फाइन, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। सो a इंटू 9 माइनस बी निकाल लिया। ठीक है, नाउ नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज। मेरे को सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी 9 माइनस बी चाहिए। व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई द सेकंड ब्रैकेट विथ सो एज टू गेट 9 माइनस बी इनसाइड? मेरे को उतना आंसर बता दे, एंड इफ यू आर एबल टू गिव मी द आंसर टू दैट क्वेश्चन, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑलरेडी। सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन आपके लिए। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप। a इंटू 9 माइनस बी ऑर्गेनिकली मेरे को मिल गया। ये 9 माइनस बी को मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मेरे को ये 9 माइनस बी वायबल होगा। अभी एडजस्टमेंट इज डिफरेंट, एडजस्टमेंट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट 9 माइनस बी को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट ये 9 भी मेरे को मिल जाए। चलो, वन मोर क्लू फॉर यू। I need to get this 9b and I have to have 9 minus b inside the bracket. How do I adjust? Adding 1 to both sides? Not really, na Shivansh? B square भी नहीं आएगा, 9b चाहिए. Focus on the 9b part. I want 9b to be consistent. Now I can't simply make it minus b. I want 9b to be present. So if I want 9b here, minus b को किससे multiply करना है? That's the question. As simple as that. Minus b multiplied by what gives me 9b. Very straightforward. इसको निकालने का, इसको निकालने का. That's it. Correct. Yeah. So Aru got it -9. ठीक है. So if I multiply this by -9 तो क्या होगा? We'll just see. No Nitin, -9. Shubham, you are right. Yes. So -9 से multiply किया. Now I'll address the extra term later, but this part is fine. 9a minus ab, this is fine. -9 into minus b is giving me plus 9b also. That is also fine. But ये -9 into -9 1 -81 का टर्म आ गया है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए I will add plus 81. Now, is this equation the same as this equation? That's the only thing that you need to understand. If you have understood this step, you have understood everything in life. Life of this question. ठीक है? A into 9 minus B minus 9 into 9 minus B plus 81 will give you exactly the previous. Fine. Now what will happen? A minus 9 will be common. Multiplied by 9 minus B will be common. Plus 81 will be equal to 0. Right? Now, A minus 9 into 9 minus B will be minus 81. If I just shuffle the terms here, a minus 9, how can we write 81? 81 into 1, 27 into 3, 9 into 9. Yeah, and in each of these cases, a is greater than b. If I would have written this as 1 into 81, a would have been 10, b would have been 90. तो नहीं चलता. तो a को हमेशा b से बड़ा होना चाहिए. तो a minus 9 को b minus 9 से बड़ा होना चाहिए. So एक फैक्टर या तो बड़ा तो इक्वल होना चाहिए. So 81 into 1, 27 into 3, 9 into 9 are the only three cases that exist.
for this particular question. ठीक है, अब इतना मेहनत कर लिया, आंसर निकाल लिया. I hope everybody understood what the answer is. The answer is 3 basically. So there are 3 values or 3 sets of a comma b that exist. Now fun fact. ठीक है, it's time for a fun fact. Just tell me one thing. How many factors? How many factors does 9 have? And then I will give you a homework question. Usko karna and put it in the comment section. What is it that you are getting for that? And then you see if you are getting some trend that exists. ठीक है? How many factors of 9 exist? Simple सा question. Yeah, positive 3, Shivansh. Correct. Perfect. और अपना आंसर क्या था? What was the answer to this question? 3. ठीक है? I'll give you one more question. चलो. Exactly same concept. मतलब exactly same premise. But यहाँ पे 1 by a plus 1 by b is 1 by 12. Solve this question for me and put it in the comment section whenever the video is live. Aru, correct? The answer is right. What you said, 3 is correct. 1 by a plus 1 by b equal to 1 by 12. Do this entire thing and tell me what the answer is, and then see if factors of 12 make any sense to. Yes, Aru, 139, correct. We don't even need what are the factors. I am just asking how many factors. ठीक है, एक स्पेशल केस के अंदर बिकॉज यू आर 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय 9, यू विल इजीली बी एबल टू गेट दिस. इसका एक काउंटर क्वेश्चन भी है. Now, because this has happened and you know that this is very easy, Cat asked you a very beautiful question in 2008. 4 by m plus 1 by n equals 1 by 12 and n is less than 61. वैसे कुछ क्वेश्चन था और 54 to 60 ऐसे कुछ तो था, some 54 to 61 kind of a thing, right? So Cat is also a bit smart. So ये shortcut is not something that I told you earlier. This is the best way of solving this, right? But एक shortcut exist करता है. वहां पे the question is 1 by 9 के कितने factors? That's what you have to tell me. तो ये वाला solve कर लेना. Try to put it in the comment section whenever you get time tomorrow, whenever you are able to do it. एक बार ये कर लेना and tell me. I'll try to explain to you ये कैसे आता है. ठीक है? Use the same method that we have used. 1 by a plus 1 by b is 1 by 12. So 12a plus 12b is ab. A into 12 minus b is something into 12 minus b. And then you will have to adjust something. And then वो adjust करके फिर कुछ तो answer मिलेगा. And then you have to tell me what that answer is. ठीक है? चलो, that's your homework for today. So that was the last question, I believe. Yes. So on that note, I think we can close the session. If there are any doubts, let me know. Otherwise, I will assume that everything is hunky dory and I can let go of you and you can enjoy the match. Okay? Sure. Great. All right. So I think I'll close the session now. Thank you so much, everyone, for turning up. Tomorrow we will be having another session on geometry. That will be the last session for this week. So we are doing this Monday to Friday. So tomorrow's session will be on geometry. I think it will be live somewhere around 10 p.m. today. So you can take it either tonight or tomorrow morning, anytime during the day, so that you are prepared for the session tomorrow. Again, we can discuss the questions directly. And yeah, so thank you everyone for turning up. I hope it was clear to you what we did today. And I'll see you again tomorrow for the geometry session. Yes, have a great evening ahead of you, everyone. Yes, I'll see you tomorrow. All right.